ना 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 ना। क्या कुछ नहीं तेरे हारे कलम वहां ब्राइटन पे, लेकिन ब्राइटन फैंस चले गए 90 मिनट के बाद, मैच खत्म होने के बाद जीत के खुशी मना के, ये वहां 2 घंटे तक गाना गाते रहे खड़े होके सब। ऐसा लग रहा है पूरा लिवरपूल सिर्फ शराब ही पी रहा है। हाँ, डिजर्वेडली सो। या मैन, मतलब छुट्टी इतनी, सो वी वन टाइटल्स विद गेम्स टू गो बिफोर, वो ठीक है, वो कोविड के टाइम की बात थी, बट चैंपियंस लीग जीता था तब लोग थे, बट इतना पार्टी किसी ने नहीं किया था कि, खैर हाँ वो भी है, चैंपियंस लीग इज लाइक द लास्ट गेम ऑफ द सीजन, वो में एंड में होता है, तो खैर मतलब इवन आई एम टेकन अ बैक। एक दो हफ्ता तो मैंने भी फुल फ्लेश पार्टी किया, लेकिन फिर मेरा ठंडा हो गया कि अब थोड़ा नेक्स्ट सीजन की तरफ देखें। और भाई उधर तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ शराब चल रही है। मतलब हमारा, आई थिंक हाँ लिवरपूल के लिए it means a little different this time. I think वो 20th टाइटल है, हाँ वो भी so है। on and so अब forth. वही So 20 वाला पूरा लेके और बस वहीं खड़े हुए थे और सिर्फ गाना गाए जा रहे हैं सब yeah. लोग। इवन क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं यार, तो आई एम वेरी हैप्पी इन अ वे, बट ठीक है यार, एक आध मैच तो जीत लो, मतलब बचे हुए सारे ही फंसाने हैं क्या। आर्सेनल से उस दिन ड्रॉ हुआ, वो भी जान बची है सेकंड हाफ में किसी तरह, और Hmm. चेल्सी वाले मैच में तो बिल्कुल हैंगओवर में थे सब, चलो कोई बात नहीं, कल आराम से जीत भी सकते थे ऑन अनदर डेट, मतलब 2-1 पे साला को दो ऐसे मौके मिले। एक तो वो Yeah, I कर्ज, saw. मुझे लग रहा है वो कर्ज टूटेगा नहीं, वो जो गोल्स असिस्ट का रिकॉर्ड है ना, वो मेरे ख्याल से टूटेगा ही नहीं, 7-8 मैच हो गए वो वहीं फंसा हुआ है। ठीक है, Hmm. पिछले मैच में डियाज ने ऐसा छोड़ा 1-on-1, बिल्कुल जहर, मतलब वही असिस्ट काउंट हो जाता, वो रिकॉर्ड टूट जाता। फाब्रिगास के साथ हो चुका है पहले, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में उसने बिल्कुल आग लगा दी थी, एंड ही वाज सो क्लोज टू ब्रेकिंग दैट असिस्ट वाला रिकॉर्ड, लेकिन फिर सेकंड हाफ में वो बिल्कुल डेड हो गया, वो टूट के ही नहीं दिया वो Yeah. रिकॉर्ड। तो थोड़ा मेरे को वो भी लगता है कि थोड़ा सा कर्ज है शायद, बट देखो एक Hmm. मैच और है। और हाँ मैं कह रहा था कि पैलेस से अब फाइनल मैच है, फाइनल डे जिस दिन ट्रॉफी मिलेगी, मतलब वो तो बिल्कुल ऐसा है कि फुटबॉल जाए भाड़ में, आ जाओ तुम भी FA कप लेके आना। और हम अपना ट्रॉफी लेंगे एंड वील हैव अ ग्रैंड पार्टी। वो तो मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट यार फुटबॉल तो बिल्कुल बैक सीट पे चला गया। थैंकफुली जस्ट टू क्लोज द लिवरपूल पर्सपेक्टिव, तो आज का वीडियो लिवरपूल के बारे में नहीं है वैसे, बट थैंकफुली ब्रो जो साइनिंग्स हमने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया है, फ्रिम्पोंग आ गया, Right. Yeah. ठीक है, मतलब ट्रेंड यही है और फ्रिम्पोंग का मेडिकल चल रहा है। और ब्रैडली का भी 5 साल का कमिटमेंट नया साइन करवा लिया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, कैरेकिस का भी डील Kirkes. ऑलमोस्ट, हाँ Uh, ऑलमोस्ट, मतलब अगर भाई ने बोल दिया हियर वी गो तो फिर तो हो ही गया है मतलब। तो फुल बैक्स तो दोनों नए आ गए हैं, और अभी ऑब्वियसली रॉबर्टसन भी रहेगा कुछ टाइम, बट hmm. मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी गुड फेज एज अ लिवरपूल, एज अ फुटबॉल क्लब। Hmm. एंड देखो, स्ट्राइकर पे जरूर नजर है मेरी, वो कौन है, अब वो इसाक है कि वो एल्वारेज है कि वो कौन है, पता नहीं, बट कोई ना कोई तो आएगा। Of course. टाइटल जीतने से हेल्प तो हुआ ही है. हुआ है। Let's see अब where we find Liverpool next year. या मैन, मतलब रियली लुकिंग फॉरवर्ड, अभी इस साल तो मेरे को ये था कि टॉप सीजन की स्टार्टिंग में ही टॉप 4 क्वालिफाई हो जाए किसी तरह, तो वही बहुत है, और वो नहीं हुआ तो चाचा अगले साल मैनेजर बनेंगे। फॉर आवर ऑडियंस व्हेन आई से चाचा आई मीन स्टीवन जेरार्ड। सो इट कुड हैव गॉन डाउनहिल दैट दैट वे आल्सो, कि स्लॉट से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, डच मैनेजर से कहाँ हो पाया, वैन गाल तक को खा गई है लीग, बट हो पाया है अब तो। सो थैंकफुली हम उस कर्व पे तो नहीं जा रहे, अब मैनेजर तो ये रहेगा हमारा कुछ साल, एंड उसको भी नया Hmm. कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे। एनीवे लिवरपूल तो चलो पार्टी करते रहेंगे, दुबई जाके, इबिजा जाके, ठेके पे जाके। यूनाइटेड और टॉटनहम का क्या होगा ब्रो, यूरोपा लीग फाइनल आ गया कल, क्या वाइब आ रही है ये तो बता दो। यार वाइब तो अकॉर्डिंग टू द सीजन तो टॉटनहम ने हमें 3 मैच ऑलरेडी हरा दिए हैं, तो वो वाइब तो अच्छी नहीं चल रही है. एंड लुकिंग एट द ट्रेंड इन इतना अदर खौफ, लीग्स आल्सो. इतना नहीं, खौफ, खौफ। खौफ कुछ नहीं है, रियलिटी. अब तो एंड ट्रेंड आल्सो इन द सीजन इज इन अदर लीग्स, जिन टीम्स ने आज तक बहुत सालों से टाइटल्स नहीं जीते हैं वो जीत रहे हैं. तो बोलोनिया हैज वन, एंड आई थिंक हैरी केन हैज वन अ टाइटल फाइनली, पैलेस, and I think Crystal Palace, of course.
Newcastle. So I Yeah. hope United break that loop and they win. I mean, of course, I want them to win. I believe they can win because लीग तो एकदम छोड़ रखा है बहुत टाइम से. कुछ मतलब नहीं है लीग में, कोई भाग भी नहीं रहा लीग में. मतलब किसी तरह इज्जत बचा के बस एक आधा गोल से हार के आ जाते हैं. एंड यूरोपा लीग में टोटली डिफरेंट. So I believe we can do it, but it's totally an open game. Tottenham also is a team that plays on the front foot. या तो बहुत गोल मार देते हैं या बहुत ही गोल खा लेते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. यार टॉटनहम भी डिफेंसिवली तो कवर्ड है. उनके वो प्लेयर्स तो वापस आ गए एंड स्पेशली व्हाट्स द नेम ऑफ दैट डच गाय नहीं वेंडरवेन. या वैंडवन. बिग फैन. मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट प्लेयर. लेकिन मैडिसन नहीं है ब्रो. दो और प्लेयर्स इंजर्ड हैं. ऐसा नहीं है कि I टॉटनहम. think Kulusevski is also not there. या कुलुसेव्स्की इज आल्सो नॉट देयर. मैडिसन इज नॉट देयर. एक और उनका इंपॉर्टेंट प्लेयर आउट है. आई एम गेटिंग. Bergwall, I think. या Bergwall. बर्गवाल इज आल्सो नॉट देयर. मतलब वो तो इसी सीजन ब्रेक थ्रू किया है बट ही इज अ डिसेंट वेरी डिसेंट मिडफील्डर और बॉक्स टू बॉक्स खेलता है. सो तीन मेजर प्लेयर्स ना होना इज अ लॉस. सो टॉटनहम का प्रॉब्लम मेरे पर्सपेक्टिव से तो यही चल रहा है. टॉटनहम का प्रॉब्लम है कि उनके तीन मेन प्लेयर्स नहीं है. यूनाइटेड का प्रॉब्लम है कि उनके कोई इंजर्ड नहीं हो रहे हैं मेन प्लेयर्स. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. लोग यूनाइटेड में मेन प्लेयर शायद लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है. एक्चुअली जितने फॉर्म में हमारे प्लेयर जैसे आते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं. फॉर यार एग्जाम्पल जर्सी. ब्रूनो को छोड़ के कौन अच्छा खेल रहा है? यार बहुत प्लेयर्स एक्चुअली अच्छा खेलना शुरू कर रहे थे बीच में. जर्सी started playing very well, started getting goals and assists, injured हो गया. In the defensive line, Lenny Oro started playing well, injured हो गया. या Then Mattis de Ligt, I know the floor is open for debate on how he plays, but वो लेट्स भी डोंट injured डू हो इट. गया whenever he started playing well. या उसका करियर तभी कई साल पहले खत्म हो गया. एनीवे इतने बड़े बड़े चांसेस किसी को नहीं मिले जितने डिलीट को मिलेंगे एट सच ए यंग एज. Yes. सो आई होप यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब हमारा बात होता था यूरो साइन हुआ एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द गाय अभी जो मेंशन जर्सी साइन किया बोलोनिया से. Xerxes, Lenny Oro. यूरो पे तो बहुत बड़े बड़े क्लब्स की नजर थी. वो यूनाइटेड आ गया. ही वाज सो हाईली रेटेड. जर्सी मैंने तेरे को पता नहीं तेरे को याद है कि नहीं. मैंने तेरे को बोला था शायद तुषार से बोल रहा था मैं. ही इज द क्लोजेस्ट टू रॉबर्टो फर्मिनो एज अ प्लेयर. Yeah, I know. Yeah, yeah. तो I ऐसा नहीं है. believe that. हाँ वो टैलेंट का अंडरस्टैंडिंग है मुझे. इट्स द क्लब आई थिंक. मतलब यार जो क्लब अपने Yeah, yeah. स्टाफ को टिकट्स नहीं दे पा रहा है यूरोपा लीग फाइनल में पहुंचने के. मैनेजर को अपनी जेब से वो टिकट्स खरीदने पड़ रहे हैं. वहां क्या तूफान मचा हुआ नहीं, है आई थिंक मैच में. नहीं, आई थिंक वो स्टोरी तो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है. एंड आई थिंक दैट इज अ स्टोरी दैट इज कमिंग आउट टू शो Amorim इज अ गुड पर्सन फ्रॉम द क्लब ओनली बिकॉज उसका सीजन इतना खराब रहा है. आई मीन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल तो टुगेदर. saying बट ये ये मुझे मार्केटिंग एक्चुअली. मार्केटिंग स्टंट है. मतलब पैसे यूनाइटेड ने दिए हैं लेकिन हाँ. क्या बात कर रहा है. नहीं, पैसे यूनाइटेड ने नहीं दिए हैं. यूनाइटेड ने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करा है. So in fact, I got to know this from one of the podcasts that I was watching, and Danny Murphy was in it. तो वो अपना लिवरपूल का ही बता रहा था that when they used to reach Champions League finals, I think he was in one of them, and he said that we used to get 2 tickets free per player, and then we used to get 20 to 25 tickets pool per person in the main team and staff who can buy for their friends and family, but still you had to buy them. Those 20-25 tickets सिर्फ दो यार ही डैनी फ्री. मर्फी कब यार कितनी पुरानी बात है. अब थोड़ी होता है ऐसा. अरे आई एम जस्ट सेइंग, कितना पुराना, क्या 2005 में ही तो गए थे उसके साथ, Bro, और two कितना decades पुराना. ago. That's 2 decades ago. In the age of AI and smartphones, that's like previous हाँ, millennium. but also remember United has not moved forward in 2 decades. We're still there. So अरे the protocols have 2011 का not एक रायन गिग्स का इतना फेमस कोट है. इतना वायरल होता रहता है वो आजकल. So 2011 Ryan Giggs on a show said this: we will never fall off like Liverpool. Liverpool had finished 8th. Liverpool have never finished below 8th in the Premier League era. और उससे पहले तो डोमिनेशन ही चल रहा था. बट इतनी हंसी आती है मेरे को वो सब सोच के. मतलब सीरियसली ब्रो 16th 17th यूरोपा लीग फाइनल and one of these teams is going to get into the Champions League next season. मतलब it's just plain crazy. There's absolutely no logic to it. मतलब अब तो ये but ऑप्शन ही नहीं है कि कोई बेटे but या I don't understand that discussion altogether. That's the rule of the tournament, right? Why are यार people blaming that 16th and 17th don't deserve to go in? अग्री. That's the rule. नहीं So नहीं आई एम नॉट सेइंग दे everyone. डोंट डिजर्व इट. और जो हाँ, बातें प्रायोरिटाइज किया है दोनों ने पिछले 10 10 मैच of तो उन्होंने course. छोड़ दिए हैं लीग के कि हमें तो Yeah. वो मैच जीतना है.
वो हाँ सो एंड आई थिंक वहीं पे है ना, स्पेन में है फाइनल, उन्हीं के स्टेडियम, बिल्बाओ। बिल्बाओ, बिल्बाओ में है ना, राइट। तो बेचारे वो सेमीफाइनल में बाहर हो गए। खैर फिर यूनाइटेड नहीं आ पाती, तो कोई बात नहीं। इतना बुरा हाल है बिल्बाओ का, ये मुझे नहीं पता था जब वो पहला लेग इतना बुरी तरीके से हारे, और फिर सेकंड लेग में भी थोड़ा सा तो नो वेव आया। इनफैक्ट, तो अब उसकी बात कोई करेगा नहीं क्योंकि यूनाइटेड के पीछे सब पड़े रहते हैं। बिल्बाओ had actually conceded only 10 goals at their home the whole season, and then against United this they conceded 4 in one game, and I'm talking about the second leg जिसमें रेड कार्ड नहीं मिला था। हम्म। तो उसमें यूनाइटेड खेल रही है, ऐसा नहीं है। when they want to play they can, but the only problem is we don't know which United shows up in which match. यार एक तो सिंपल है, हॉलैंड की जगह मैगवायर को खिलाओ। चेल्सी वाला मैच भी वो जिता ही गया था। वो तो एक आधा इंच, मतलब इट्स नथिंग, इवन लेस देन दैट, है ना। टो उससे वो नील से ऑफसाइड ऑफसाइड हुआ हो है। गया वो। हाँ, हाँ। व्हाट अ फिनिश मैन, मतलब सीरियसली। और गर्नाचो का नाच रहा था जब जेम्स ने घुमा दिया उसको। वो कहाँ घूम रहा था इधर उधर। गार्नाचो को डिफेंसिवली तो है ही उसका एक अपनी डी के डूपॉल बाहर इज हम ऐसे स्टिल गोल गोल वेरी थोड़ी यंग। घूमते हैं, लेकिन अपनी डी टॉप पे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। ठीक है कोई नहीं। कोई नहीं तो है ब्रो, एनीवे यूनाइटेड एंड सरेंडर तो हैज बिकम सिनोनिमस नाउ इन अ वे। आवाज नहीं आती यूनाइटेड फैंस की, सरेंडर नहीं हो पा रहा है आर्सेनल फैन से। एंड दिस इज अ कॉल आउट टू ऑल द आर्सेनल फैंस हु यूज्ड टू फॉलो आवर चैनल, हु यूज्ड टू लाइक आवर पोस्ट, हु यूज्ड टू वॉच आवर स्टोरीज। मैंने देखा है कैसे आप लोग गायब हुए हो, इट हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड एट ऑल। ये बात ठीक है, हमने इंटरनेट ने आर्सेनल फैंस के साथ बहुत बुरा किया है पिछले 1-2 महीने में, बट इन अ वे यू डिजर्व इट। So Arsenal fans का, and just a small note while we are having this conversation, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे घर के बराबर में था, रहता है, तो मैंने गाड़ी अपनी घर की बाउंड्री से 1 इंच आगे खड़ा कर दी, और जैसे मैं बाहर निकला तो वो एकदम भागता हुआ आया कहीं से, पता नहीं कहाँ से, मेरे को देख रहा था, पड़ोसी। एंड ही केम एंड ही सेड, यार आप गाड़ी ना थोड़ा पीछे खड़े कर लिया करो, ये जो बाउंड्री है इसके जरा पीछे रहे तो बेटर। ठीक है, देर इज enough and more space for 100 cars to be parked outside our houses। पूरा पार्क है चारों तरफ, आप कहीं भी, तू तो आया है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आया था फुटबॉल ग्राउंड से, और मैं उस दिन गया था ये ट्राई करने की मेरा नी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है एसीएल के बाद। और मैं 10 मिनट खेला एंड कट 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 वो क्रंचिंग साउंड दोबारा आया, सो आई वॉज एनी वे कमिंग इन दैट मूड। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली नोइंग माई सेल्फ, जैसे उसने मुझसे ये बात बोली, मैं चुपचाप गाड़ी बाउंड्री से क्या और 5 फुट पीछे कर लेता, 1 इंच की तो बात ही नहीं। उस दिन मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा भाई क्या मेंटालिटी है, मतलब इन बातों पे झगड़ा करेंगे क्या हम लोग, हम नेबर्स हैं यार, और हम शहर में हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं सब इधर। ये गांव वाली बात मत करो मुझसे कि ये मेरी जमीन है, यहाँ तूने बुग्गी कैसे खड़ी कर दी, वगैरह वगैरह। तो मेरे को बोलता है, हर्ष यार ये ना तुम्हें सिगरेट की वजह से ना गुस्सा आने लगा है, तुम सिगरेट पीते हो तो तुम, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन योर ब्रेन। मैंने कहा भैया मेरे को 3 महीना हो गया सिगरेट छोड़े, तो आपके इस आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं। हाँ तो इसीलिए तो हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है। 1 सेकंड तो मैंने इधर उधर देखा, मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, हेड्स भी मेरा, टेल्स भी मेरा, सब कुछ। या आर्सेनल फैंस हैव शोन द एग्जैक्ट सेम बिहेवियर ऑल सीजन, ऑल सीजन। उनसे आप बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, देर आर ऑलवेज सम गुड पीपल, एक्सेप्शंस होते हैं, सो तुषार को भी जानते हैं हम, वो बेचारा कभी ऐसे बेवकूफी की बात नहीं करेगा, जो है वो है, एक्सेप्टेंस है, रियलिस्टिक बात करेगा। अगर आप उसको कुछ ऐसा बोलोगे कि विच मेक सेंस, तो विल प्रोबेबली एब्जॉर्ब इट एंड अंडरस्टैंड इट। बट देन और भी लोग हैं हमारे दोस्त आर्सेनल फैंस, मेजोरिटी कंप्लीटली लॉस्ट देयर ब्रेन। एंड जस्ट एन एनेक्डोट ऑन ऑल आर्सेनल फैंस, वो आप, वो इंसान जिससे बात नहीं की जा सकती। एंड phase 1 Oliver Glasner is more successful than phase 6 Arteta। That goes without saying। Congratulations to Crystal Palace, and thank God for all the teams who are winning trophies for the first time, Newcastle, Palace, तो हमारे लीग में ही है, चलो। एनीवे, कमिंग बैक टू द यूरोपा लीग फाइनल, तो ब्रो 100% चांसेस ऑफ विनिंग तो नहीं दे रहे थे यूनाइटेड को, वो तो हो ही नो नहीं नो सकता किसी भी मैच से पहले, बिल्कुल है ना। और वो जो स्टैट आने लगा है आजकल प्रीमियर लीग में, उस पर तो मेरा कोई विश्वास नहीं है। विनिंग प्रोबेबिलिटी, व्हाट द फक यार, इट मेक्स नो सेंस इन फुटबॉल, नो सेंस एट ऑल। पर चलो, या डेटा कंपनीज को भी पैसा कमाना। सो क्या परसेंटेज है, कितना फेवरेट टॉटनम है, कितना फेवरेट यूनाइटेड है, बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट्स गोइंग आई थिंक I have a biased opinion on this, of course. So I think
70-30 to United. 70-30, wow. एक यार मेरे को Yeah, I ये think I truly believe whoever gets the first goal will have a very good chance of winning the game because neither of the teams have come back. I know, of course, United did it against Lyon in the quarterfinals, but beyond that, I have seen no sign where we concede first and then United shows a lot of you know passion and comes back into the game. So, and Tottenham also have good players themselves. yeah. If they score first, I think I can totally imagine us losing that game. And if we score first, the same can happen to them. सो बेसिकली यूनाइटेड का क्या गेम प्लान है अब फाइनल में जाते हुए कैसे I think he's rested. I think they have to play on the front foot because clearly our major defenders are all injured or on the brink of coming back, not fully fit. So I don't think we can go for a defensive approach. On the other hand, all our midfielders and attackers are thankfully injury free, except one or two. So we have to play on that strength and we have to go on the front foot and go towards what Ruben Amorim actually wants to do. He wants to yeah play in his philosophy, I think. so there's something he wants to do but he's not been able to communicate and convince his players to play the way he wants वो तो नहीं हो पा I रहा don't think it's about convincing. I don't think it's about convincing. I think it's a lot about quality. And also, he didn't get a preseason to even, have that training sessions with his players to, tell them how to do or how to behave in certain situations, when to drop back, when to go on front foot. So I think this whole, at least for the first few months, has been his preseason uh, since yeah November. And now that he's actually coming to realize that some people are not good enough, so he's slowly starting to shape up his team. So time लगेगा, of course. कौन आगे एकदम से कर दे रहा है? ठीक है, आर्ने स्लॉट की किस्मत बहुत अच्छी थी, यर्गन ना क्लॉप छोड़ ना के ना गया ना था. ना 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 And that too November से ही है. So I think Ruben Amorim can only do so much in this period of time. And if players come through and they actually, it's a mentality issue. I honestly think it's not even a quality issue. United have good individual players also. It's a mentality issue that has been going on for the past so many years. There are at least 6 to 8 players in that team who have sacked two or more managers at Manchester who United. are blatantly responsible for the sacking of those managers Yeah. and that list So includes some great managers yeah, of I- course. From Jose Mourinho to, I mean, there are a couple of players from the Van Gaal era also. So you can yeah us offloading players is also a big issue. So that's a separate discussion anyway. यार इतनी मेजर तो सैलरी वो पर तो कौन खरीदेगा वो तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगी अरे नया नया कॉन्ट्रैक्ट दे दे रहे हैं यार. वैन गाल तो 8 साल पहले चला गया. 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट होंडा किसी को दिया था. correct absolutely so I asked you this question how United are going to approach this game what would be the strategy how they'll play because so 3 months ago I would not have asked you this question because Spurs played a certain way and they forced the opposition to play the same way it was full throttle attacking football end to end right आप स्पर्स के साथ खेल रहे हो तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव फुटबॉल यू हैव टू जस्ट स्टे ऑन द फ्रंट फुट वो बास्केटबॉल गेम बन जाता है ऑलमोस्ट बट लेटली एंड by the way someone who promised that I win things in my second season and he's very close to fulfilling that promise so 90 minutes away pretty much so Ange has become a little more pragmatic especially in the Europa League we have seen him uh, sort of moving away from his style being uh, experimental defensively also sometimes staying on the back foot not going full throttle and to his credit and I appreciate people who are willing to change if something is not working out so to his credit he has found results also going along with it Premier League to chhod hi dete hain but at least Europa League final tak they have made that game so what kind of a game plan are you expecting from Spurs then I think Spurs are going to play how they usually play because we've played them 3 times this season, and all the 3 occasions they played high intensity football, and we could not match them. okay And our problem, if they play high intensity football and they play that high line where the defenders are at the halfway line, we do not have the players to break that. I think
one of our fastest players in the attack is Garnacho or maybe Ahmad, but I don't think both of them will play together. But in these situations, our breakthrough player was usually Rashford, because one thing he has is raw pace, and he used to just go through and somebody will ping a long ball and he'll be Yeah, one on one and suddenly he'll score. yeah, So that was the outlet for us, but that is not going to happen. So I think from Ruben Amorim's perspective, if Tottenham go high intensity football, I think United has to be on their toes. And maybe what I have a feeling is Ange will do that because he knows he's already won that three times doing that. And Amorim will have to be smart and try to control the possession instead of playing through them all the time, because we certainly don't have the players to do that. That can play on the half turn and swivel away from a player and quickly put a through ball into the striker, or maybe switch the flank. We don't have that quality as of now. So yeah, no point doing that. But I think we can control possession to a certain extent. That's the best we can do. And of course, being patient and not making too many mistakes. Our big problem is we make mistakes so much. And on top of that, we have Onana standing at the back, where I have no real belief in him. If someone comes in for a one-on-one, or somebody has a shot, he can totally spill that away. So a hmm. lot of things to be careful about. But yeah, that's what I think is gonna happen. But then again, everything depends on the first goal. United score the first goal, everything changes. Tottenham scores the first goal, everything changes. So Yeah, a yeah. lot of Goals factors here. definitely throw. So let's say somebody scores in the first 5 minutes, entire game plan, all the strategies gone out of the window. वो तो है ही. Goals Yeah, change yeah, of games, course, yeah. and that's definitely the case. Who do you want to start in the final though, Ahmad or Garnacho? I think Garnacho, because I saw Ahmad starting against Chelsea and he doesn't look fit to have that impact over 90 minutes. So he And comes from the I think bench and he's better off coming from the bench, because when I have seen him coming off against Atletico Bilbao in the 60th minute, and for the 30 minutes he was running their defense ragged. So I think Garnacho should start because he has that fitness. He's been fit all season, not just a game. I think he should start along with Bruno Fernandes. Bruno Fernandes should not start as a number eight. That does not go well for us. Ruben Amorim has tried that. Yes, I can see Bruno Fernandes plays in a very controlled way when he's playing behind the number 10s. He's passing on the ground and everything. But then defensively, we are vulnerable because he's not that quick and he's not that strong physically to have that battle in the midfield. I think our best midfield would be Casemiro, Ugarte, and Bruno with another number 10 like Garnacho, and no other option than Hoyland, so I'm not going to comment on that. And I hope Lenny Oro comes back, because he's one player who has speed at the back, and if we need someone to recover, Maguire doesn't have that. Delete doesn't necessarily have that. And who else do we have? I don't think we have anyone else with any real speed in the defense. So he's very important. If he's not playing, I think our chances of winning go down by 10-20% straight away. yeah. I was watching this Latan video the other day where he was asking Hoyland. I'm sure you saw that. Yeah, did you? So, no, I So think I missed that. Zlatan was basically he recorded a video and he was talking to Haaland. Said, "What the fuck are you doing, man? 20 games, no goals. If you don't know how to finish, come to my school. I'll teach you." So something on those lines. So yeah, Zlatan was a United player for a while. People have forgotten that now. So there is some empathy he has, and he wants those problems solved. So something is going to give. There are these myths, right? Which are some of which have to be broken. So Ange wins things in his second season. It will be the coldest line in all of football if that happens on the final. In the final, Spurs have never won a trophy, so that's something that might happen. Casemiro has never lost a European final. Uh, so again, those personalities, Hmm. big personalities, winners, they sort of have a different mindset when they're approaching these games, and you never know. It could be infectious. One tackle and the entire Yeah, yeah, team builds up on it. Uh, yeah, of course. if Casemiro was, I mean, if so, I know how he has performed in the league and how United have performed in the league.
But I would not be shocked if he puts in one from 35 yards in the final. He has done it before. It can happen again. Yeah, And yeah, league may the way he has been playing, he looks like somebody who's approaching 40, but he's just 33. He's not that old. Casemiro. I think he will be a key player as far as I can see. If United are to find a way to win that final, Casemiro will have a great game. But on the other hand, he could take a red card as easily as scoring one from 35. yeah, totally. वो भी हो सकता है डिलीट के साथ भी वो खतरा हमेशा बना रहता है कि वो किसकी छाती पे पैर रख दे so from a Spurs point of view, of course, as a neutral, no, I'm not a neutral, right? I hate United. So as someone who hates United, of course, I want Spurs and Ange to win their first trophy. Plus, जहाँ सारी दुनिया ने जीत लिया इस साल, वहाँ ये भी जी लें अपनी जिंदगी यार, कुछ तो फायदा होना चाहिए. So I hope Spurs do not get pragmatic in the final. I hope they play to their strengths. I hope they run United out of the park and they just keep going full throttle with that basketball approach. And I think that'll make for great viewing also. We will. So as a Liverpool fan, I love Spurs. If we could play Of 38 matches course. against Spurs, we would we would probably have 38 into 3, whatever that number is, that many points, record breaking, crossing 100 every season. I love their style of football. But again, that gives the other team an opportunity. And if you have, as an opposition, if you have the players, if you are a little mindful about it, if you can break fast, like you said, Rashford nahi hai. There are hardly any players who can really break fast from the center of the pitch. So that's probably not going to work out for United. But someone like Mainu, for example, could be a real asset because he can turn, Mhm. he can play that Yeah, pass, he can. he can run. Yeah. Yeah, So yeah, really excited, man. So it's like a battle of what's the word for it? 16th, 17th, not getting relegated. With the current points that United and Spurs have, and with one game to go, the projection, whatever points they're going to get out of that final game, 7 seasons in the Premier League, they would have really gotten relegated. So ये हुआ Hmm. कि कोई pressure ही नहीं रहा relegation zone में because the three teams that came from the championship really struggled all season. Yeah. But otherwise, 37, 38 is the number, right? That has always been the number of points that the team has required to stay safe. So they're just there, just about there. एक भी टीम नीचे से अगर थोड़ा पुश करती और 37, 38 पे होती इस टाइम, so West Ham, United, everybody would have been dragged back into it. Spurs, right? Hmm. Um, I wish that could have happened, but ठीक है. Maybe next season, I guess. So yeah, really looking forward, man, and good luck to you. Good luck to Yeah, you. Any signings that yeah. you're really looking forward to this summer from a United perspective? Any positions in particular? I think two names have come up linked very heavily. I think Matheus Cunha. I think that's almost done Yeah, from that's Wolves. almost done. And That, Dibbling. that's Yeah. almost done. And I think Tyler Dibbling. Victor Gyökeres is stuck between Arsenal and United. If United win, I think Amorim can pull him here. If we get in the Champions League, I think the problem is of finances. A lot of people are saying that Gyökeres wants Champions League to play. I don't think that's the case. He will play under Amorim. United can't afford it. That's the problem. United can't even So afford a parade, man. They are doing a barbecue in their stadium at the end of the season. वो तो What भाई the किस fuck, चिंदी man? लेवल पे मतलब पैसा बचा रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा वो तो मतलब क्या ही कर रहे हैं So एंड for people who've not heard it, if United win, and this is coming from Ineos and the operations guys, so if United win the Europa League, there would not be a parade of any sort. What they're planning is a barbecue uh, at the training facilities, and I'm sure. I mean, you go and search on Instagram, on social media, you would see so many memes going on about it. So yeah, being miser is one thing, but Ineos has taken it to the next level, man. And he's burning through cash simultaneously. So and I think this so you know dumb in the way that they have presented this notion. They could have easily said that we don't deserve a parade because we're 16th or yeah. 17th, whatever. That could have been a much better way of saying it. They're saying we're saving money and we're not doing a parade, we're doing a barbecue. What the fuck, bro? Bring your own booze. Yeah. Embarrassing, man. ओफो, अरे यार किसी ठेके पे ही बैठ जाते कहीं.
Model shop. Anyway, as you can see, I am really happy with everything that's going on at United. How they have suffered and suffered and suffered all season. So there is a chance at redemption for both the teams. Of course, there is. This is the chance. It's tomorrow night, right? Wednesday. Yeah, Wednesday night. So within the next what 35, 36 30, hours, yeah, yeah. we will have the Europa League winner. We will have one team qualifying for the Champions League, and the other will finish where they finish with empty hands. Really looking I forward. think Ange, Yeah. I think Ange is leaving. I've heard either way, even if they win or lose, Ange is leaving. Oh. So I don't know what happens. And Amorim is not leaving either way, he wins or loses. So But that's I the situation. heard Amarim say the other day that अगर मुझसे नहीं हो पाएगा, I will leave, and I'm very close to it. He did mention Right. something. Yeah, there was an article I also read, but I think He said it they're in the gonna. press conference, यार. बोला उसने. No, so he said, I am not going to quit. There was an article that suggested that he's going to quit. So he clarified in the press conference, I'm not quitting anytime soon. And he said that I will know by next year, this time, if I am good enough or not. Something on those lines. I'm paraphrasing, of course. So I think, and deservedly so, I think he deserves at least one Oh yeah, summer and he does. some support from the owners. And I am not sure how many people are going to come in. That is also a big issue. So let's see. And Yeah, not just the turmoil that United find themselves in, they don't have any money. They don't. yeah, And what a job Glazers have done, by the way. है ना? अब blame भी नहीं करता है कोई उनको. मतलब एक नंबर यार. What a brilliant way of approaching the entire saga. वो अपना हैमबर्गर खा रहा है बैठ के टीवी के सामने. Glazers are playing it in a very different way, and all the money that actually United are not broke. They're just investing it towards the new stadium, and they're investing it in the government because they need their support for the new Manchester area and everything. Anyway, that's a different conversation. Maybe बट we ब्रो can इनियोस have को a ले separate. आओ. गाली भी वो खाए, पैसा भी वो खर्च करे. सो बेसिकली रैटक्लिफ का वर्थ इज 1/4, मतलब 1/4 इज गॉन ऑलरेडी, है ना? और खुद उन्होंने 155 मिलियन पाउंड अलग ले रखा है उससे. सो उन्होंने नो आई एम टेलिंग यू उन्होंने रैडक्लिफ को वही 5 साल बाद की पिक्चर दिखाई है कि जब हमारा स्टेडियम बन जाएगा तो हम हमारे शेयर्स एनीवे दैट्स द प्रेडिक्शन राइट नाउ यूनाइटेड्स वर्थ इज अराउंड 5 बिलियन स्टेडियम बन जाएगा तो वो 10 बिलियन हो जाएगा तो एनीवे तुम्हारा शेयर जितना भी था वो अब डबल हो जाएगा सो that's the whole thing and Radcliffe is not dumb he's a businessman of course he's in ऑफ it कोर्स. for the money also या so that's why he's there but yeah he certainly can't handle the football part of it. वेल, sad to hear about Ange, though. I wish he stays irrespective of whatever happens, but chances are he'll not. I mean, there is an understanding about Daniel Levy also that we have. Yeah. Wow. I hope someone like Oliver Glasner or Fabian Hurzeler doesn't go to Tottenham. Nobody should ruin their career like that. And Tottenham is a big club. There's no two ways about it. They've always been a very big club, and the support, especially in the Scottish regions, the Irish regions of the world, is massive. But a Mm. manager goes there and they suddenly get destroyed. Mourinho के साथ तो United और Spurs दोनों जगह हुआ. At least from United, when Mourinho left, his greatness, if I may, was intact. But when he went to Spurs, I mean, it was so chaotic. Conte, so chaotic, right? Great managers coming there and then leaving. Ange also, I think, is a very good manager. If he had been the manager of a team like Brighton or Palace, I think he would have done a better job, much better job. But yeah, man, I wish him all the luck. I wish him all the success. I hope he wins tomorrow and then dances like crazy and then Yeah. just comes out in his press conference and tells people that I told you so. That's it. I want to hear that. Yeah. Yeah. And if United lose, we are not doing a post-match video in any way possible. But if we do it, then we certainly do a video, and I'm going to be singing Man United chants on the अरे नहीं यार, session. इतना बुरा हाल भी नहीं है. European finals in the last 5 years,
Tottenham 2, Arsenal 0. वो कल देखो टेक्स्ट किया था ना मैंने, तो वो आने वाला था तब, हावर्ड्स बेंच पे था, देन ही इवेंचुअली जॉइंड ना न्यूकासल वाला, तो when would Havertz be back? He would be back for the Champions League final. इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी यार. Again, And Arsenal. I also learned Havertz is still their top scorer, not playing for the last 3-4 months. Yeah, man. He's still their They top need a scorer striker with badly, badly. yeah. Ajay, by the way, And he's Evra का एक this Patrice Evra video that went viral last week, where he was blaming Arsenal fans, and he was absolutely spot on. The problem is not the club. The problem is not the manager. yeah, Arteta is a wonderful guy, yaar. And he gets yeah, it. He gets the club. He gets everything. He's done so much for them. It's not the players. Players are also not the problem. वो ठीक है, stay humble और वो वाला सारे episode. But ठीक है, Lewis Kelly and Odegaard. I mean, people are allowed to do that stuff. It's the fans. It's the fans. yeah. अभी सीजन खत्म भी नहीं हुआ है, अभी ऑलरेडी नेक्स्ट सीजन वाला सागा फिर शुरू हो गया. Already. Yeah, man. So anyway, that is again just giving you a reason why we make so much fun of Arsenal. It's not the club. I appreciate everything that Arsenal have done, especially ever since I started watching football in those early years. It was Wenger and beautiful football. Nobody has been able to replicate that yet. Beautiful football तो Arsenal ही खेलते हैं. And at their best, they've always played beautiful football. But yeah, अब Cazorla और Ossis की वो वाला टाइम तो कभी वापस नहीं आएगा. अब वैसे प्लेयर्स भी नहीं आ रहे, अब वैसे हो गया प्लेयर्स भी नहीं आ रहे, वो उतना सिल्की, उतना हाँ. अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं. वो सब स्पेन में हो रहा है बस, और कहीं नहीं हो रहा. Hmm. Anyway, cool man. Good luck to All United. right. Good luck to Spurs. And I think Yeah. wrap up our show. Please do not just watch this reel on Insta if you're watching this right there. Do watch our full video on YouTube. This is for all our viewers. And do follow us, like us, share if you like. Maybe send this to an Arsenal fan just to piss them off. And stay in touch. And share your comments. We'd love to read them. What do you think about this? Yeah. All right. All right. Great, man. Good chat, and I'll see you soon. Yes.